डोनट्स बनाने के लिए वी नीड 1 egg, 30 grams of butter, 2 teaspoons or 2 tablespoons, 2.5 teaspoons of yeast powder, 2 tablespoons of sugar, and 1 cup of milk, which is exactly 200 milliliters or somewhere, and 2.5 cup of measuring cup of white flour, that is 350 grams of maida. Chale, let's begin it. We will first use this warm milk. See, I'll take this milk. I will put 1 egg in this. Okay. And whisk it properly. Add 2.5 teaspoons of, see, this is a half teaspoon. This is 1 teaspoon. I will use this. This is 1 teaspoon. Always keep these measuring instruments at your home so that it's easier for you. I mean, मैंने measure करके रखी हुई है, तो I will just put the whole of it. I will whisk it properly and add 2 tablespoons of sugar from there. 2 to 3 tablespoons of sugar. Sorry. I will add everything into this one, and I will whisk it properly. Let's see. You have to be very keen about the quantity of everything while you. I am using pink Himalayan salt, just 1/4 of teaspoon. See, because salt is not much needed. I will add a little bit on. Okay, now we shall add this into our. I will just give it a good mix now, because we have added butter. You can also use margarine if you want to. To prepare icing of donuts, I have taken a wok and greasing it with oil, and now I'm taking 2 cream packets, and they are frozen. That is why they have this kind of texture. Please don't go on the texture. I will let them settle down, and I will just mix them with the help of whisker, and then I will add half cup of milk. Here I'm adding half a cup of milk and 4 tablespoons of sugar and 3 tablespoons of cocoa powder. Now I will give it a good mix until the bubbles settle down and the cream gets its creamy texture back. Yeah, you see, I am mixing it really well, and it has started to settle down nicely. So this is the final look. अब हम इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए, and we will add it in the bowl. Don't worry, it will settle down on its own in the refrigerator. आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं. Totally depends upon you. So I will just keep it inside the fridge. Sorry. As you can see, my dough is almost ready. और अब मैं इसको एक लंबा सा काट के तो छोटे छोटे इसके पेड़े बना लूँगी, और पेड़े बना के इसके गोल गोल बीच में से कैप लेके, छोटा सा बॉटल का कैप लेके इसको मैं इस तरह से बनाती जाऊँगी, डोनट्स की शेप देती जाऊँगी. इसी कितनी प्यारी डो जो है वो फ्लफ़ी डो बनी है. यू सी, मैं इस तरह इसको ट्रे में सेटल करती जाऊंगी. इसको बना के कुछ देर रखेंगे, 10 to 15 मिनट्स हम इसको रखेंगे. ये देखें, ये सारे इसी तरह से हम कर लेंगे. ये मैंने दूसरी ट्रे ले ली है, और अब मैं इसको सेटल कर रही हूँ दूसरी ट्रे में. और अब हम इसको तकरीबन हम बना के ना ऑलमोस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स हम इसको रख देंगे, ताकि ये जो है डो दोबारा से राइज़ हो जाए, इस फॉर्म में राइज़ हो जाए. ठीक है ना. अब हम ये कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल डाल लेंगे और उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, और फिर हम उसको मीडियम लो फ्लेम पे हम डोनट्स को फ्राई करेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे. ठीक है. यहाँ मैंने स्पून की मदद से डोनट्स को फ्राई करना शुरू कर दिया है, मीडियम लो फ्लेम पे. ना ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा, ना ऑयल ज़्यादा ठंडा होगा. इट्स लाइक मीडियम
लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। और बनाते हुए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा स्पून से दबाते भी जाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और कच्चे ना रह जाएं। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे हम इसको निकाल नहीं सकते। जिस तरह का ये टेक्सचर है हम इसको निकाल नहीं सकते। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको स्टेनर टाइप बास्केट में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो निकल जाए, जस्ट लाइक दैट। बाकी भी इसी तरह फ्राई करके आपसे दोबारा मिलती हूँ।